Hey guys, welcome you all. My name is Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the GIM GOA. Yes guys, why you should target the CMAT and why this particular college, the best business school to target among all the other institutes. Guys, stay tuned with me throughout this video. We'll talk in detail about why you should target GIM GOA, exam and cutoff, that means the complete admission process, seat availability, fee structures, selection process, placement stats, and also the top recruiters who oftenly visit the campus, and we will pick you up and will provide the mota package. And why only CMAT? Then guys, first of all, most of the colleges accept the CMAT score. Second option, the time duration and the equal weightage between the section. यहाँ काफी benefit मिलता है students को to score 95 plus percentile easily. And guys, if you talk about the difficulty level, then it is quite easy as compared to the CAT, ZAT and other MBA entrance exams. So let's find out why CMAT and why GIM GOA. So batches we already launched. If you want a preparation for CMAT, and along with CMAT, if you are preparing for CAT, MBACET, TISS, NMAT, SNAP and other MBA interests, then guys, don't worry at all, you will get complete preparation and also the mentorship, complete motivation, thoroughly guidance about the selection process criteria. Yes guys, for 2023 and 24 you can start preparation with us. You will get all these features, so call on 8828581455 and book your seat right now. So why GIM GOA? And guys, kahan se start karo? So first of all, constantly ranked among the top 15 private business school in India. Yes guys, 80 plus student events across the year, 26 skill enhancing student clubs, partnership with SAS, 100% placement stat is there, 12:1 student faculty ratio. And guys, it also comes under the top big data analytics program. Yes guys, and here you will get the best faculty because 70 plus PhD professors are available on the campus, 28 years of educational excellence, first Indian business school to be listed on the SDG dashboard, that is nothing but the Sense Office University USA, and 16 collaboration and exchange with international universities. Guys, बहुत सारा आपको एक्सपोजर मिलने वाला है यहाँ, and the most important thing, 5,000 plus strong alumni base it has. If you have entrepreneurial skills and if you have some ideas in your mind, then guys don't worry, Atal Incubation Center for promoting entrepreneurship and startup is there. Best for the world pioneering business school in positive impact ratings globally. We are, and it is also rated amongst the top 4 pioneering business school in India. Guys, here student come from the 22 states in India, and don't worry at all, अगर fee structure आपको यहाँ थोड़ा भी high लगता है, don't worry, 4 lakh in merit scholarship per student, 26,000 plus books in the library, और बहुत amazing campus है guys, scenic campus है, 50 acres में फैला हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब जाओगे यहाँ से निकलने का मन भी नहीं करेगा. सो अगर इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है, देन गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फैसिलिटीज़ चेक करो, उसकी फी स्ट्रक्चर. ऑल्दो फी स्ट्रक्चर अगर हाई भी होती है, डोंट वरी एट ऑल, अगर आपको वो ROI काफ़ी अच्छा देता है, देन यू शुड गो फॉर इट. ओके, इट विल वर्थ इट. विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टार्ट ऑल्सो, बट उसके पहले विल टॉक अबाउट द एग्जाम एंड कट ऑफ. सो किसका स्कोर एक्सेप्ट होने वाला है? कैट का, जैट, CMAT का एंड GMAT का. नाउ आप कोई भी एग्जाम चूज कर सकते हो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, डोंट वरी एट ऑल गाइज, उसके बाद जैट आने वाला है, जैट के लिए प्रिपरेशन कर लो या फिर जैट का भी एग्जाम दे सकते हो. जैट के बाद आप इजीली CMAT का तो क्रैक कर ही लोगे, बट लुक एट द कट ऑफ ट्रेंड. ओके, 85% कैट प्रीवियसली एक्सेप्ट होता था 2018 में. दे आफ्टर 2019 की अगर हम बात करें, वेंट टू 87, 88 एंड देन 89. देन कट ऑफ कीप ऑन चेंजिंग, इंक्रीज होते जा रहा है. दैट्स वाई. And it says about the competition is high, and it says about competition towards the GIM GOA. yes guys, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में competition है क्योंकि उनको एडमिशन चाहिए GIM GOA में. now if you talk about the ZAT, 80 to 81, then 82 in 2020 and 21. and if you talk about the CMAT, 95 to 97.5, thereafter 98 and now 98.5 in 2021. so basically guys, 98.5 आप इजीली परसेंटाइल ला सकते हो CMAT में, एंड फॉर दैट आउट ऑफ 400 ट्राई टू स्कोर 330 प्लस मार्क. यस गाइस, ऑल्दो यहाँ काफ़ी अच्छा परसेंटाइल भी बनेगा आपका और यहाँ इजीली एडमिशन भी मिल जाएगा. GMAT ट्रेंड्स 600. ओके, इट्स सेम.
Now let's talk about the selection process criteria. So either you are coming through ZAT, CAT, GMAT or CMAT score, then आपका 40% वेटेज होने वाला है वहाँ. Past academic records को they will give 15% weightage. Work experience if any then 10%. Face to face evaluation, the personal interview 30% weightage है guys यहाँ. So यहाँ आपको तैयारी करनी होगी. Don't worry at all, selection process के सारे parameters के लिए भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है. प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स देन 5%. ओके, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, वर्क एक्स है, इन सब के लिए आपको वेटेज मिलने वाला है. सो ओवरऑल वेटेज जो भी कंपोजिट स्कोर होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी सेलेक्टेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट इनटेक. देयर आर 300 सीट्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर, देन फी स्ट्रक्चर थोड़ी हाई ज़रूर है गाइज. ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा मैं एज़ कम्पेयर टू IIMs, बट या आप सोच सकते हो कि IIM जितनी फीस यहाँ भी है. बट यस, सी 18,07,000 इज द फी स्ट्रक्चर हियर for all 2 years. Okay, term 1 3,49,000 and thereafter 2,91,500 keep on. Okay, in all sem term 3, term 4, 5 and term 6. Okay, so overall जो fee structure है guys ये high है 18 lakh, but don't worry at all guys, very soon we'll see the placement stat also. Hostel fees, so double occupancy, non AC and also the single occupancy AC with bath attached. So ये सारे details है, you can go through it and this is the complete fee structure. Now if you talk about the placement stats, see the figure guys, don't worry at all कि यहाँ आपको fee structure काफ़ी high लग रही थी 18 lakh and 7,000. Look at the placement stats, 27.80 the highest package and 12 lakh is the average package. हॉस्टल थ्रू जा रहे हो गाइज, एक बार पैसा लगने वाला है, ठीक है, बट डोंट वरी एट ऑल. प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं गाइज एंड डेफिनेटली वंस गेटिंग द एक्सपीरियंस इन योर रिलेवेंट फील्ड देन गाइज डेफिनेटली यहाँ आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो कंपनीज आती है गाइज काफ़ी टॉप नोच कंपनीज आती है. इफ यू टॉक अबाउट द टॉप 10 देन 21.40, टॉप 20 19.05, टॉप 50 16.60 एंड टॉप 100 को मिला है 14.36. एवरेज पैकेज 12 लाख, मतलब जितने भी 300 कैंडिडेट्स है सबको 12 लाख के ऊपर ही पैकेज मिला है. सो दैट मीन जितने भी 300 स्टूडेंट्स है फॉर द PGDM प्रोग्राम सबको एवरेज 12 लाख का पैकेज तो मिला ही है गाइस. ओके, सो इट्स वर्थ इट. यस राइट गाइस. सो प्रिपरेशन करना तो बनता ही है गाइस, क्योंकि टारगेट करना है जिम गोवा और काम करना है इन टॉप नोच कंपनीज में, एसेंचर, ITC लिमिटेड, एशियन पेंट्स, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टाटा कैपिटल, JP मॉर्गन, डिलॉयट, Ernst & Young's, Gartner, HCL, Axis Bank, Hastin, V-Guard and lot more companies. Okay guys, so that's all from my side. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, इंक्वेरीज है, you can ask me in the below comment section. But don't forget प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए guys, क्योंकि हमें डिसाइड करनी है कुछ टॉप बिजनेस स्कूल्स, राइट? So let's start preparation with us. We have started classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. Pan India students, you can interact live with us. So call on 8828581455. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.